Hey guys, my name is Shubham Singhal and I'm a chartered accountant. I had cleared my CA final in the November 2018 attempt with an All India rank 4. This video is for those CA students who are going to appear for their exam in the May 21 attempt. 6 महीने बाकी हैं अभी. उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी. आपने अभी कोविड के टाइम का फ़ायदा उठा करके काफ़ी सारे क्लासेस लिए होंगे. बट आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड वन थिंग गाइस, कि पढ़ाई तो यार सब कर रहे हैं. सारे लोग जिनकी भी सीए की एग्जाम है अभी 6 महीने बाद, वो लोग सबसे पहली चीज़ वही कर रहे हैं कि उनको पता है आर्ट सब्जेक्ट है और उनको पता है आर्ट सब्जेक्ट पढ़ना है. हम अलग क्या कर रहे हैं जिससे हमको यार रैंक आए या फिर हमको अच्छे मार्क्स से पास हो जाए, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में एग्जामेशन आ जाए. व्हाट डिफरेंट आर वी डूइंग? सो द पॉइंट इज एवरीवन इज डूइंग हार्ड वर्क. द डिफरेंस कैन ओनली बी मेड इन द स्मार्ट वर्क. So how can we do better smart work so as to improve our results? I have 5 tips for you which will help you plan your preparation leave. अभी जो 6 महीने के प्रेपरेशन लीव बचे हैं उसमें काफ़ी सारी अनसर्टेनिटी होती है, तो मेरे पास 5 टिप्स हैं जो आपको हेल्प करेगा प्लान करने में. बिकॉज एज दे राइटली से दैट इफ यू फेल टू प्लान यू आर बेसिकली प्लानिंग टू फेल. सो द 5 tips would be really helpful for you because at this point when you are about to enter into your examination preparation leave you should be aware कि तुम क्या करने वाले हो. How does the 6 months look like? So I wish I had some guidance of this sort, although somehow I managed to collect the thoughts from here and there, but then I want to compile it and collate it all for you at one place. So I will be coming up with more videos on how to help you with your preparation leave. But to start with, I want to give you 5 major tips. To start with, the first tip would be have a macro level plan of your preparation leave. अभी हम जिस पोजीशन में हैं, हम आज से 6 महीने को एक साथ प्लान नहीं कर सकते कि मैं आज से 4 महीने बाद फर्स्ट डे पे ये पढ़ूंगा, सेकंड डे पे ये नहीं पढ़ूंगा, बिकॉज वी रियली आर नॉट अवेयर ऑफ हाउ दी कंटेंट इज, व्हाट दी सिलेबस इज. हमको ऐसा लगता है हमने क्लासेस कर ली है तो हमको पता है कि यार क्या है, लेकिन जब तुम एक बार अपने आप से पढ़ने बैठोगे तो तुमको समझ आएगा क्लासेस में सिर्फ 40-50 चीज़ें ही पढ़ाई जाती है और 40-50 चीज़ें होती है जो तुमको खुद को पढ़नी होती है. जैसे क्लासेस में तुमको कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, लेकिन नाउ हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट एंड देन राइट इट डाउन इन द एग्जाम इन अ मैनर कि वो एग्जामिनर को भी समझ आए. तो वो जब तुम करने बैठोगे तो तुमको समझ आएगा सिलेबस इज मोर देन यू हैड रेड इन द क्लास और मोर देन यू हैड अंडरस्टूड इन द क्लास. सो नाउ यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू प्लान योर नेक्स्ट 6 months थॉरली. तो अभी आप एक मैक्रो लेवल प्लान बना सकते हो. मैक्रो लेवल प्लान मतलब क्या? आप ये समझो कि आपको कितने रिविजन्स की जरूरत है. क्लासेस जो हो गए वो छोड़ दो. अब जो तुम पढ़ोगे वो तुम मान लो तुम्हारा फर्स्ट टाइम स्टडी है, उसके बाद तुम करोगे रिविजन. तो फर्स्ट टाइम स्टडी कर लिया और एक बार रिविजन कर लिया और सेकेंड रिविजन भी कर लिया. उससे ज़्यादा रिविजन हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन डोंट मेक हेक्टिक प्लान्स और अनफीजिबल प्लान्स कि मैं 5 रिविजन करूंगा, 6 रिविजन करूंगा. वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं होता है और इतनी ज़रूरत भी नहीं होती है. तो अभी एक मैक्रो लेवल प्लान बनाओ दैट 6 months, there are 6 months, I need to revise twice and I'll study it for the first time. So accordingly segregate कि से 2 महीने में 2.5 महीने फर्स्ट टाइम पढ़ूंगा, 1.5 महीने फर्स्ट टाइम रिवाइज करूंगा और फिर 1 महीने फिर सेकेंड टाइम रिवाइज करूंगा. सो दैट वे यू विल एक्चुअली हैव अ मैक्रो लेवल टारगेट. देन उस टारगेट पे तुम फोकस करो कि हाँ मैंने डिसाइड कर लिया 2.5 महीने में मेरे को एक बार पढ़ाई करनी है, तो 2.5 महीने में मेरे को एक बार 8 सब्जेक्ट पढ़ने, तो डे वाइज बांट दो कि 10 दिन एक सब्जेक्ट ले, 10 दिन एक सब्जेक्ट ले. सो सिमिलरली प्लान एंड हैव अ टारगेट इन अ डिफाइंड मैनर. डोंट हैव अ target that I'll do this on a daily basis, although you will need it later on. All right. And once you are done with the macro level planning, start achieving it. Second tip that I want to give is that complete your classes right now and finalize the materials that you are going to use. That is, जो भी तुम्हारे क्लासेस अगर कुछ पेंडिंग है और होने चाहिए, आइडली दो क्लासेस पेंडिंग होते हैं, कोविड ना हो उस सिनेरियो में. अभी कोविड की वजह से अगर आपको टाइम मिली है, आपने क्लासेस ले लिए हैं तो अच्छी बात है, बट इफ नॉट देन यू शुड हैव to first focus on completing your classes, whatever is pending, and also finalize on the materials. This is a very important point that I am going to say. For each and every subject that you are going to read, finalize on which material are you going to use. It can be either the study material of the institute or the material of the faculty from whom you have taken the classes, or some new faculty जिनका तुमने नाम सुना हो पर तुमने क्लासेस नहीं ली हो. Because अभी हाल फिलहाल में हुआ था नवंबर 20 की एग्जाम है, 10 दिन पहले मेरे को एक लड़के ने कॉल किया, कहता है कि मैंने पहले इंस्टीट्यूट की स्टडी मटेरियल से पढ़ी थी, फिर मैंने एक फैकल्टी की बुक ले ली, अब मेरे को दोनों ही नहीं समझ आ रहे हैं. तो इट इज़ अ वेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन एंड यू डोंट वांट टू क्रिएट इट फॉर योरसेल्फ. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फाइनलाइज ऑन द मटेरियल दैट यू आर गोइंग टू रीड एंड यू स्टिक टू इट. मान लो मैंने लॉ की जो की थी क्लासेस वो मैंने
इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से की थी, बट देन लेटर ऑन आई रियलाइज दैट द स्टडी मटेरियल इज नॉट गुड एनफ, बट देन आई डेंट स्विच माई मटेरियल, आई एक्चुअली फोकस्ड ऑन एनहांसिंग दी स्टडी मटेरियल। तो मैंने दूसरे फैकल्टी की बुक ली, उसमें से जो जो कॉन्सेप्ट्स मेरे को स्टडी मटेरियल में मिसिंग लगे वो मैंने ऐड करता गया, या फिर मैंने स्टडी मटेरियल में रेफरेंस डाल दिया कि इस ये वाला कॉन्सेप्ट एक है तो तुम वो बुक से पढ़ लो। सो दैट वे आई इंश्योर दैट माई मटेरियल इज कंप्लीट। बट then you have to decide it on the start. How do you decide it? Talk to your seniors and understand that is this material fine, should it be enough to crack CA final or CA IPCC, and based on that you finalize the material and complete your classes. Alright, the third tip that I want to give you is that understand your weakness and focus on that first. So basically IPCC में मेरे को I had exemptions in all the subjects except audit, because I realized that audit is not something which I'm very good at. So when I started with my final preparation leave, the first subject that I took up was audit. Although it was very challenging to carry forward that particular subject for 4.5 5 months, but then you have to first get that comfort कि जो subject मेरे को fail करा सकता है वो subject को मैंने पहले खत्म कर दिया। तो that helps you have a comfort zone that I have read a subject, and then you can revise it as many times as you want, so that you don't end up losing a battle which you are not very good at. Alright, so that should be your primary focus, that you understand which subject you are weak at. It could be SFM, it could be theory, it could be direct tax, it could be anything, and you read that subject first based on your classes, based on your experience. Fourth tip that I want to give is that eat the frog first, which means take the biggest task first and complete it, then you will understand that the worst is behind us and you can focus on the easier things. So for example, there is a subject called SFM which you like, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर वो तुमको पसंद है, तुमको पता है मैंने क्लासेस भी अच्छे से की है, मेरे को जमता भी है, सो यू डोंट नीड टू टेक दैट अप फर्स्ट। व्हाट यू शुड डू इज, जो सब्जेक्ट आपको नहीं जम रहे हैं, जो सब्जेक्ट आपको बहुत बल्क सब्जेक्ट है, जैसे FR होता है, DT होता है, बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है ये, you have to bring the syllabus under your control. So you will have to eat the frog first, you will have to read the bigger subjects first, and based on that you will be in a comfortable position to take up the smaller subjects. Alright, so that would be my fourth suggestion. The fifth suggestion that I want to give you, and which is probably the most important, is that CA final or IPCC for that matter is not about the intensity of your preparation, it is about the consistency. मतलब तुम आज 12 घंटे पढ़ लो, 15 दिन 12 घंटे पढ़ लो और फिर पढ़ाई छोड़ दो. It is not about, that is not how CA exam works. The idea here is to start 6 hours today and gradually ensure that you reach to a point wherein you are reading 12 hours. और वो जब तुम 12 घंटे पढ़ रहे हो तब 12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है. बहुत सारे लोग ये करते हैं कि शुरू बहुत ज़्यादा जोश में करते हैं और ख़त्म उतने ही जोश में कर लेते हैं. So consistency is more important. It is never about intensity. Definitely you'll have to reach a point wherein you are reading 12 hours a day, 13 hours a day. लोग कहते हैं कि मैंने कभी यार 16 घंटे तो मैंने पढ़े ही नहीं, 12 घंटे मैंने पढ़े ही नहीं. बट तुम क्या करोगे एग्जाम के पहले, जब 1.5 दिन में तुमको 15 दिन की पढ़ाई करनी होती है, तब तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं होता है, तब तुम बैठ करके मोबाइल में यूट्यूब नहीं चला सकते हो. सो पढ़ते सब है, बट यू हैव टू ग्रेजुअली रीच देयर. You cannot do that. You start with 12 hours a day, you read for 2 months and then you give up your hopes because you are like बहुत पढ़ लिया और एग्जाम 4 महीना दूर है. So focus on the consistency. Read every day. Do not ensure that you never read less than what you read yesterday. अगर कल 6 घंटे पढ़े थे तो आज 6 और आधी घंटे होने ही होने चाहिए. That should be your primary focus. 6 घंटे भी हो जाएंगे तो ठीक है, लेकिन कल से कम पढ़ाई नहीं होनी चाहिए until and unless there is some other scenario. Apart from that guys, stay motivated. I'll be coming up with more videos on this channel because I really want to help you, because मैंने जब पढ़ाई की थी तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार कोई एक जना होना चाहिए जो हमको कॉन्स्टेंटली गाइड कर पाए कि यार ऐसे पढ़ लो तो ठीक रहेगा, ये मटेरियल रेफर कर लो तो ठीक रहेगा. So I'll be coming up with more such videos. Stay tuned and all the best guys.